Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science class and I am your science teacher Aparna Pandey from DPS Lama Chowd School. Okay, I am your science teacher Aparna Pandey from DPS Lama Chowd School and this is your science lecture, and here today we are going to start our revision work. Okay students, we have done half of our chapter number 8. Only one topic is left, and that we will do in our chapter number 8. Few topics that are left that we will do later on, because as you all know that soon our exams are going to start. So from today I am going to start here our revision video. Okay, today we are going to start revision work. So as you all can see here, the same thing is written on board that today we are going to do revision of chapter number 1. Okay students, today we are going to start revision of chapter number 1. And you all are familiar with chapter number 1. We have done several times questions and multiple choice questions, theoretical questions, oral, viva, so many things I have taken related to this chapter. So you all know the name of our chapter is Plants the Producers. Plants the Producers. Plants, plants, the, producers, producers. So beta, let's start. Now, you all are aware with this chapter. You all have watched previous videos related to this chapter, and I hope that your concepts are clear. If there is any doubt related to any topic, you can go in my channel and you can watch again the same video. Okay, the several topics I have explained there in parts. You can go through the parts of this chapter. Whatever doubt is there, it will be clear. Okay, no need to worry about that. So now today we are going to start our revision work. Let's see. Here I am going to explain you book exercises that we all have done, and there with related to that questions I will also provide you information. Okay, so here question is name the following. Okay, but here you have to give name. You have to tell about name. Okay, name of the following. So let's see. Number 1 is kitchen of a plant. अब kitchen of a plant हम किसे कहते हैं? मैंने आपको प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स चैप्टर जब पढ़ाया था बेटा, एट दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. व्हाट आर दे? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स. ओके, this I have explained you. Then I also told you that particular part has particular function. So now this question is asking about the function of that part which is called kitchen of a plant. ये उस पार्ट के बारे में पूछ रहा है जो kitchen of a plant कहलाता है. So you all know that it is leaves. Leaves are also called the kitchen of a plant. So what will be the answer? Answer will be leaves. 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 Leaves are the kitchen of a plant, and leaves are also called food factory. Leaves को हम और भी एक चीज क्या बोलते हैं? Food factory. Food factory. And it is also known as kitchen. Kitchen. Kitchen of a plant. Okay. So here from question number 1, it is clear that leaves are also called kitchen of a plant, and leaves are also called food factory of a plant. Okay, so from one question we come to know about 3 important points. Okay, now second is lines of a leaf. Second one, it is asking about lines of a leaf. अब देखिए lines of a leaf. अब lines of a leaf पूछ रहा है, तो I think that we should here discuss about the structure of a leaf. हमें leaf के structure के बारे में discuss कर लेना चाहिए. You all know about this. Okay, you can see suppose
is our leaf. Like this, you all know about this. Then we have this. You all are familiar with this structure. I have given you for making this in your science notebook also. And we have done this leaf structure in our test also. So you all are familiar, but again here I am explaining you. Okay beta, this is leaf. Now let's discuss about different parts of leaf. Okay, let's discuss about different parts of leaf. So what is here? You can see the broad green part. जो भी ये broad part होता है ना पूरा leaf का, the broad green part is called lamina. सबसे पहले तो हम इसे क्या कह देंगे? Lamina. L-A-M-I-N-A. Lamina. The broad green part of a leaf is called lamina. एंड जो लीफ हमारी स्टेम से जिससे हमारी ये लीफ अटैच होती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक. S-T-A-L-K स्टॉक. ओके, द पार्ट थ्रू विच लीफ अटैचेस इज कॉल्ड लीफ स्टॉक. द ग्रीन ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना. देन यू ऑल नो दैट दिस सेंटर, ये जो सेंटर पे लाइन जा रही है, दिस सेंटर लाइन इट इज कॉल्ड मिड रिब. इसे हम क्या कहते हैं? MID, mid, RIB, rib. You all are familiar with all these names. Okay, तो ये जो सेंटर में हमारी लाइन जा रही है, this is called mid rib. And actually ये mid rib है क्या? This is the main vein running along the center. ये भी एक vein है जो main vein center से जाती है. This is called mid rib. Okay, then another thing we have this but it is called the side veins. जैसे midrib भी है, midrib is also a vein but it is a main vein. Okay, midrib भी हमारी vein ही है but midrib is a main vein. And what are these? These are called the side veins. इन्हें हम क्या कहते हैं? These are called the side veins. Okay, these are called side veins. A number of veins found all over the leaf. These are called side veins. And this tip portion is called apex. A-P-E-X, apex. Okay, a tip of a leaf is called apex. So beta, here with only just one question related to a leaf structure, I have explained you whole structure of a leaf. Okay, बहुत easy है, हम सबको पता है. This is only a revision class. You all are aware about these all things. Let's discuss them again so that if any doubt is there, it must be clear. Okay. So this is our leaf. ये पूरी leaf है. The broad green part of leaf is called lamina. The part through which leaf attaches to the stem, it is called stalk. The center main vein, this is called midrib. And from side veins are coming out, it is called side veins. And the top part is called apex. And the top part of a leaf is called apex. Okay. So this we have discussed about the structure of a leaf. Now what the question was that I have asked to you? It was asking to us that lines on a leaf. Main नहीं पूछ रहा है, lines on a leaf. And lines on a leaf are called veins. उसे हम simple veins भी कह सकते हैं और we can also say them side veins. Okay. Now the process of preparation of food by plants. वो कौन सी process है जिससे कि plants अपना food बनाते हैं? You all are familiar with this name. देखिए, the process by which plants prepare their food by their own is called photosynthesis. ठीक है, वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड photosynthesis. And I have also explained you the meaning of photosynthesis. Photo means light and synthesis means banana. Means light की प्रेजेंस में बनाना. और क्या बनाते हैं? फूड. तो लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये फोटोसिंथेसिस किस में चलता है? ओनली इन ग्रीन प्लांट्स. ओके, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स. ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया. अब इनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल with the help of
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, देखिए फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब जब ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें क्या क्या चाहिए, ग्रीन प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए बेटा क्या चाहिए, दे नीड सनलाइट। मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं ग्रीन प्लांट्स की फूड प्रिपेयर करने के लिए, for preparing food green plant needs sunlight। okay, sunlight चाहिए सबसे पहले तो, then it needs chlorophyll। अच्छा, sunlight भी हो गया, chlorophyll भी हो गया, then what it requires, water, sorry, then it requires water and one more thing is there, just think over it। Plants need sunlight, chlorophyll, water and CO2। उन्हें और क्या चीज चाहिए, CO2। CO2 is also called carbon dioxide। CO2 is also called carbon dioxide। ठीक है, when plants prepare their food by themselves, that process is called photosynthesis and the requirement for photosynthesis is sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide। किसी भी प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो मेन 4 चीजें चाहिए वो हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके ओके, सो नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हमें क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जब प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करना होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो प्लांट्स को चाहिए सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स प्लांट्स विल गेट, यहाँ के प्लांट्स को ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से, सनलाइट प्लांट्स गेट्स फ्रॉम सन, chlorophyll is present in leaves, the green pigment that is present in leaf is called chlorophyll। carbon dioxide plant absorbs from surrounding, जो हम एक्सहेल करते हैं ना बेटा, इनहेल करने के बाद जो एक्सहेल करते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कौन करता है, प्लांट करता है। एंड वाटर, वो कहां से प्लांट्स को मिलता है, फ्रॉम सॉइल, जो किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स की हेल्प से। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन फॉर दैट फोटोसिंथेसिस। नाउ फोटोसिंथेसिस की कोई रिएक्शन भी होती होगी, तो सपोज वी हैव वाटर, I am here writing the reaction, water plus carbon dioxide, okay, in presence of sunlight and chlorophyll, it get changes into, देखिए water plus carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll get changes into plant food, get changes into plant food। Now I have also explained you about this and I have also given you another symbolic reaction also। ये reaction तो simple सी है, water plus carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll get changes into plant food, right? But I have also explained you about symbolic reaction कि जब हम water को H2O लिख देते हैं, CO2 को CO2 लिखते हैं, sunlight and chlorophyll, and in place of plant food what we write, glucose, C6H12O6। this is the reaction। okay, ये अभी उतना आपको नहीं जाना है। so this is your रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए हमारे प्लांट ने वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, सनलाइट ले ली, क्लोरोफिल ले लिया और क्या बन गया, प्लांट फूड हमारा प्रिपेयर हो गया। ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस आल्सो। नाउ अनदर इट इज आस्किंग लिक्विड यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्टार्च। ठीक है, बट इट इज आस्किंग लिक्विड यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्टार्च। अब वो कौन सा लिक्विड है जिसको हम यूज करते हैं स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। ओके, चलिए वी विल डिस्कस इट अबाउट इट लेटर ऑन। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज स्टार्च। स्टार्च क्या है?
So students, I have explained you that when plants prepare their food, they prepare their food in form of glucose and they utilize it. The food which is not utilized by plant and it is stored for later use, वो फूड जो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं करते और अपने में रख लेते हैं ताकि वो बाद में उसको यूज कर सके, दैट फूड इज कॉल्ड स्टार्च. वो हमारा फूड क्या होता है? स्टार्च होता है. दैट फूड इज कॉल्ड स्टार्च. एंड देन आई हैव टोल्ड यू सम स्टार्च containing food items like potato, rice and many other. This I have explained you in video of this chapter, right? So now it is clear what is starch. The food that is the extra food that is stored in plants is called starch. Simple सी बात हो गई. हमने क्या समझ लिया यहाँ से? जो extra food है. Now may I run this structure? You all were aware about this. So the extra food is called starch. जो हमारा extra food है plant का, that is called starch. Okay? उसे हम क्या कहते हैं? Starch कहते हैं. Now question arises that how do we test that whether the food item contains starch or not? तो इसके लिए एक test होता है and in that test we use a particular type of liquid. In that test we use a particular type of liquid and that is called iodine. किसका यूज करते हैं हम? Iodine. Okay, iodine. Iodine. Iodine का यूज करके हम starch का टेस्ट करते हैं whether the starch is present in particular item or not. आयोडीन की हेल्प से हम एक टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा स्टार्च है उसमें जो हमारा फूड आइटम है उसमें स्टार्च है या नहीं. एंड अब हमें पता कैसे चलता है? दिस आयोडीन इज ऑफ ब्राउन कलर. आयोडीन का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर. BROWN ब्राउन. ओके, ब्राउन कलर का. आयोडीन तो हमारा ब्राउन कलर का होता है. बट व्हेन वी पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन एनी फूड आइटम देन इट गेट चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक कलर. ब्लू ब्लैक कलर. ओके, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. क्या बताया मैंने आपको? द लिक्विड दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्टार्च इज आयोडीन. आयोडीन इज ऑफ ब्राउन कलर. This iodine, when we put few drops of iodine on any food item that contains starch, so this iodine brown color get changes into blue black color. तो ये iodine का जो brown color है वो हमारा blue black color में change हो जाता है, which is and this blue black color confirms that the particular food item contains starch in it. Okay, so this we have this we have already discussed about iodine and starch. Now you all know the flat broad part of a leaf is called lamina. अच्छा, air holes on a leaf through which exchange of gases takes place. अब एक बात और बेटा जो मैंने आपको अपने वीडियो में समझाई थी, that we have a leaf and leaf also breathe because plants also breathe. अब plants breathe करते हैं तो कैसे करते हैं? Plants breathe through the holes present on surface of the leaf. अब जो वो स्ट्रोमेटा होता है ना वो इधर नहीं होता. स्ट्रोमेटा होता है इधर सरफेस, डाउन साइड, बैक साइड ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होता है. अगर हम सपोज लीफ को ऐसे देखें, सपोज इट इज अ लीफ, ये अगर मैं ये कह दूं कि ये लीफ है तो ये जो डाउन पोर्शन होता है लीफ का, ये स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट. एंड या फिर ये कहते हैं कि ऊपर की लेयर में स्ट्रोमेटा नहीं होते बट अंदर अंदर स्ट्रोमेटा लीफ के अंदर होते हैं. तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रोमेटा? स्ट्रोमेटा हेल्प्स लीव्स टू एक्सहेल एंड इनहेल. स्ट्रोमेटा क्या करता है? लीव्स को ब्रीदिंग करने में मदद करता है. प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, और जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं दे रेस्पायर थ्रू stomata. They respire with the help of the stomata. Okay, so air holes on a leaf through which exchange of gases takes place.
जैसे हम भी तो जब ब्रीथ करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ना, वी ऑल्सो intake oxygen and exhale carbon dioxide. Similarly, at the time of respiration, plants also takes oxygen inside and releases carbon dioxide. And during the process of photosynthesis, plants intake carbon dioxide and releases oxygen, and this exchange of gases takes place with the help of the air holes present on the surface of the leaf, that is called stomata. Okay. Now, green color found in leaves is called chlorophyll. You all are familiar with this. The green color pigment which is present in plant, due to which plant leaves looks green, it is called chlorophyll, and it is responsible for the photosynthesis process also. Okay. One food you eat that contains starches, I have already told you, potato or rice. Okay. Now, till here, I hope that you all are clear about the topics. Almost I have discussed whole chapter by taking few short topics. Okay. Now, I am going to tell you some more things are here. It is asking lamina, midrib, apex, side veins and stalk. These all are the parts of. ये सारी चीजें किसके पार्ट हैं? लैमिना, स्टॉक, एपेक्स एंड दिस साइड वेन, ये सब किसके पार्ट है? These all are the parts of a leaf. किसके पार्ट्स है? लीफ के तो पार्ट्स हैं. अभी हमने समझा था ना पूरा स्ट्रक्चर लीफ का. ओके. Which of the following living organisms make their own food? अब देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको जरूर समझाया होगा. यू कैन सी वीडियो अगेन देयर दैट द प्लांट्स, द ओनली लिविंग बीइंग्स व्हिच एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ who can prepare their own food by themselves are plants. सिर्फ अर्थ पर एक ऐसे लिविंग बीइंग्स जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, they are called plants. इसीलिए प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ओनली द प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. जो आप और हम फूड प्रिपेयर करते हैं वो हम कुक करते हैं, लेकिन हमें रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है? प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन बेटा, प्लांट्स एक ऐसी चीज है जिन्हें कोई भी और रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाता. प्लांट्स सारा का सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल हो, और उसके बाद जब वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जो भी हो, वो सारे के सारे प्रिपरेशन प्लांट्स के अपने आप होते हैं. उनमें से बाहर किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं होता. दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्लांट्स द प्रोड्यूसर्स, एंड प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप से. तो प्लांट्स को इसीलिए हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं. नाउ इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड. सो यू विल नो वेरी वेल. ऑप्शंस आर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ग्रीन प्लांट्स और बर्ड्स. Obviously the answer is green plants. Now another question it is asking, plants get light energy for preparing food. Plants को light energy कहाँ से मिलती है? It is so simple. Plants get light energy for preparing food from sunlight. It is very simple. Now food made by plants is in the form of. अब देखिए, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड and plants prepare their food in the form of glucose. कहा था ना, ग्लूकोज. What is glucose? Glucose is a sugar. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक शुगर है. So option is given here: protein, mineral, sugar or fat. So simply the answer will be sugar, because plants prepare their food in the form of sugar, and extra food is stored in the form of starch. Don't get confused. Okay, the presence of chlorophyll in leaves gives them, very easy, I told you that leaves have green color due to the presence of chlorophyll. So the presence of chlorophyll in leaves providing them green color. Simple. Dash is stem that we eat. अब ऐसा कौन सा स्टेम है जिसे हम खाते हैं? few options are there: carrot, radish, sugarcane और turnip. अब देखिए, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर रूट्स. ये स्टैम्प नहीं है,
ये सारे रूट्स हैं, ये सॉइल के अंदर होते हैं, हम इन्हें सॉइल से निकालने के बाद खाते हैं। एंड वी नो दैट द पार्ट दैट इज इनसाइड द सॉइल ऑफ द प्लांट इज रूट्स। ओके, तो जो स्टेम होती है वो किसमें होती है? शुगर केन में। शुगर केन जो जिसे हम खाते हैं, गन्ना जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो इज अ स्टेम दैट वी ईट। The broad flat part of a leaf is called lamina. You all are clear. Fenugreek, spinach and coriander are some dash that we eat. Okay, अब देखिए, coriander means धनिया, spinach means पालक, fenugreek means मेथी। ये सारी चीजें क्या है? These all are the leaves. ये सारी क्या है? Leaves जिन्हें हम खाते हैं। Okay. Now here one question is there, one fill-up type para is there. Complete the following. Let's discuss this. It is very easy. Green plants take dash and minerals from the. तो green plants क्या लेते हैं? Water and minerals from the soil and carbon from the air to make food. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि green plants water कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। सनलाइट कहाँ से लेते हैं? सन से। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। सो दिस ओनली वी हैव टू फिल हियर। ग्रीन प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन dioxide from the air to make food. It gets energy from the sunlight. The green color pigment called chlorophyll. The green color pigment called chlorophyll traps the sunlight to prepare food. The food prepared by leaf is in the form of simple sugar and the process is called photosynthesis. Now in many places people you have seen that in many places students you have seen that water plus mineral plus carbon dioxide. Mineral is also there, so no need to worry about that. Water plus mineral plus carbon dioxide in presence of sunlight and chlorophyll. Then food plus oxygen may be also there. Okay, so ये photosynthesis के reaction हम जितने भी types के लिख सकते हैं, this already I have given you in your PDF form and I hope that you all have written that reaction in your notebooks. Okay, so students, today here in this class deeply we have discussed about our chapter number 1 and we have revised this chapter thoroughly. Kindly watch this video carefully and if you have any doubt then you can go through the proper video of this chapter. This is revision video. Okay, I hope that you will like this video and this video will help you in revising this chapter. Thank you and have a nice day ahead.